Dear students, welcome back. This is our lecture number 6 of carbonyl compounds. Let us continue with chemical properties of carbonyl compound. In this lecture, I will discuss with you oxidation and reduction reactions with respect to carbonyl compound. Myself, Rakesh Singh, Associate Professor in Chemistry, Government Degree College Kathua, Union Territory of Japan. Oxidation of aldehydes and ketones. First, let us see oxidation of aldehydes. Aldehydes get easily oxidized by oxidizing agents like acidified potassium dichromate or Carbonyl to carboxylic acid. Even bromine water, which is a mild oxidizing agent, oxidize aldehydes to acids. It is due to presence of this CH bond on carbon. Because of this bond, aldehydes get easily oxidized to corresponding acids. Aldehyde to acetic acid. Note, formaldehyde upon oxidation gives formic acid, which being unstable, get further oxidized to carbon dioxide and water. उसका reason है बच्चे. Why the aldehyde get oxidized? Because of CH bond on carbonyl. Formic acid also contains CH bond on carbonyl. Mean there is possibility of what? Oxidation. So we get this serial bond O, OH, OH. So 2 electrons withdrawing, in fact 3. So it's unstable, decomposes to give water and carbon dioxide. याद रखिए बच्चे कि जो formic acid, formaldehyde, it get oxidized to formic acid, but under the same conditions, it get further oxidized to carbon dioxide and water. Other acids, because of presence of strong carbon-carbon bond, their oxidation occur only up to the acid state. That is, they form the corresponding carboxylic acids. अब आपने क्या देखा कि aldehydes are easily oxidized to acids because of presence of this CH bond, and hence they act as strong reducing agents. जो खुद आसानी से ऑक्सीडाइज होता वो दूसरों को क्या करेगा? वो दूसरों को बच्चे रिड्यूस करेगा. That will reduce the others. So they reduce tolerance reagent and Fehling solution. First, reduction of tolerance reagent. इसको हम silver mirror test for aldehyde भी कहते हैं, याद रखिए. This is also known as silver mirror test for aldehyde and can be used to distinguish aldehydes from ketones, because ketones don't give this test. क्योंकि ketones ये test नहीं देते. Tolerance reagent is ammoniacal solution of silver nitrate. When aldehydes are treated with tolerance reagent, the aldehyde reduced tolerance reagent to metallic silver. The metallic silver deposits on balls of test tube and shines like mirror. So that is why it is called as silver mirror test for aldehyde. Ammoniacal solution of silver nitrate. So silver nitrate first react with ammonium hydroxide. Ammoniacal solution means ammonium hydroxide solution. So what do we get? We get silver hydroxide, means silver oxide. Silver hydroxide decomposes to give silver oxide plus ammonium nitrate plus what? Silver oxide again react with ammonium hydroxide and form a complex compound, diamine silver hydroxide. AgNH32 positive OH negative. Diamine silver hydroxide. Tolerance reagent. Tolerance reagent then react with the aldehyde. Aldehydes, what they do? They reduce tolerance reagent into silver. Reduction किसका हुआ बच्चे? Silver का. They reduce tolerance reagent into silver and itself get oxidized to acid. Because of presence of ammonia, the acid form the salt with the base. कहाँ से ammonia release होगी? ये तो पक्का है बच्चे. Ammonia क्यों release होगी? Because silver in +1 oxidation state was
having ammonia attached to it. When it got reduced, ammonia released. अब ये reduce हो गया, ammonia क्या हो गया? Release. तो ammonia so released react with the acid to form ammonium salt of acid. Acid नहीं मिलेगा, ammonium salt of acid मिलेगा. The reason is obvious. Along with, because we have 4 ammonia, acid को तो एक ही मिला, तो 3 ammonia will be released along with formation of water. So aldehydes, again, I would like to say aldehyde react with tolerance reagent, very important reaction. When aldehyde reduce tolerance reagent to metallic silver, which deposits on the ball of test tube and shines like a mirror. So that is why it is called as silver mirror test for aldehyde. The aldehyde in the process itself get oxidized into carboxylic acid, which react with ammonia to form ammonium salt of this reaction with tolerance reagent. Next we have reaction with Fehling solution and Benedict solution. Fehling solution is alkaline solution of copper sulfate with some potassium ammonium tartrate, and Benedict solution is also alkaline solution of copper sulfate with citrate ion. The difference is in this. It has tartrate ion, it has citrate ion. Aldehydes reduce both Fehling solution and Benedict solution into red precipitates of cuprous oxide. तो दोनों में बच्चे copper in the form of 2 positive in both copper sulfate. It also contain copper sulfate. It also contain what? Copper sulfate. So दोनों में copper 2 positive. Second, we said alkaline solution mean both contain OH negative. So aldehydes react with Fehling or Benedict solution, which is alkaline solution of copper sulfate, with either potassium ammonium tartrate or citrate. If it is citrate ion, then it is Benedict solution. If it is potassium ammonium tartrate, then it is Fehling solution. What happens? Aldehydes are oxidized, whereas the copper sulfate is reduced to cuprous. Cuprous मतलब +1. +2 से reduce हुआ किसमें? +1. Cuprous oxide. Moreover, cuprous oxide forms red precipitates. Red precipitate बनेंगे और पता चल जाएगा reaction has occurred. Now, why I have written RCW negative? Because here we have a base, NaOH. So in presence of base, acid formed always forms salt. Aldehyde oxidize, copper 2 positive ions of the sulfate reduced to cuprous oxide. Aldehyde ने reduce किया किसको? Copper sulfate to cuprous oxide and itself get oxidized to acid. But I am not writing acid, I am writing carboxylate ion. Why? Because in presence of base, it forms salt. अगर मैंने यहाँ पे NaOH शो किया होता, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो मैं लिखता RCOO Na. बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम Na पॉजिटिव को यहाँ से ओमिट कर रहे हैं. हम सिर्फ उसी हिस्से को लिख रहे हैं जो हमें रिक्वायर्ड है. We are omitting Na positive. Otherwise, if I had written Na positive, I would have written here RCOO negative Na sodium salt of acid. है ना? तो याद रखें कि aldehydes react with Fehling solution and Benedict solution to form what? क्या बनाएगा बच्चे? Red precipitates of cuprous oxide. Aldehydes reduce Fehling solution and Benedict solution to red precipitates of cuprous oxide, and itself get oxidized to salt of acid. Ketones don't give this test, and this can be used to distinguish aldehydes from. कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं, इस टेस्ट को हम यूज कर सकते हैं to distinguish aldehydes from. So this was all about oxidation of aldehyde. In the process, we learned 2 more applications with respect to aldehyde. What were those applications? Because aldehydes are easily oxidized, therefore they act as strong reducing agents. They reduce tolerance reagent as well as Fehling solution and Benedict solution. Now we will talk of oxidation of ketone. तो हम बात करेंगे किसकी? Oxidation of ketone. In case of ketone, carbonyl group don't contain carbon hydrogen bond. Ketones cannot be oxidized without cleavage of carbon-carbon bond. इसको तोड़ना पड़ेगा. Carbon-carbon bond. As carbon-carbon bond is strong bond, ketones can only be oxidized under drastic conditions. Heat करना पड़ेगा.
Hence ketones cannot be oxidized by weak oxidizing agents like tolerance reagent and Fehling solution. इसी वजह से कीटोन्स को हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की मदद से जैसे टॉलरेंस रीजेंट और फेलिक सॉल्यूशन की मदद से ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते. दैट इज व्हाई कीटोन्स डोंट रिड्यूस टॉलरेंस रीजेंट एंड फेलिक सॉल्यूशन. However, ketones can be oxidized by powerful oxidizing agents like MnO4 or potassium dichromate under acidic conditions or concentrated nitrogen. ऑक्सीडेशन होगा बच्चे कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज के साथ. फ्रॉम हेयर साइड वी गेट 2 carbon acid. From here side we get 1 carbon acid. Formic acid being unstable, as I earlier explained, get further oxidized to carbon dioxide and water. जहां भी formic acid बनेगा वो further oxidize होकर क्या बनाएगा, carbon dioxide और water. इसको अपने दिमाग में. This was oxidation of what? Ketones. Popov's rule. Very important rule. What is this rule? If we have unsymmetrical ketone, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन है लाइक दिस, जैसे हमने ये लिया, ये कहता है कीटो ग्रुप प्रीफरेंशियली स्टेज विद द स्मॉलर एल्काइल. कीटो ग्रुप प्रीफरेंशियली स्टेज विद द स्मॉलर एल्काइल मीन इस बॉन्ड पे ऑक्सीडेशन की ज्यादा चांस है एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड. कार्बन कार्बन बॉन्ड दोनों साइड है. इफ यू टॉक ऑफ एसीटोन, if you talk of acetone, you can talk of oxidation on either side because on both sides we have same group. But in this case, on one side we have propyl group, on other side we have methyl group. Propyl group, methyl group. So on which side the oxidation will occur? On which side the cleavage of carbon-carbon bond occur? What is being stated? Popov's rule states that carbonyl prefers to remain with smaller alkyl. It means oxidation will occur on this bond, that is the bond which is attached to larger alkyl. तो मेजर प्रोडक्ट इस साइड से बनेगा ए. ए दिस इज पाथ ए, दिस इज पाथ बी. पाथ ए मीन ऑक्सीडेशन एट दिस पॉइंट, पाथ बी मीन ऑक्सीडेशन एट दिस पॉइंट. दिस इज पाथ ए. तो पहले पाथ ए को एक्सप्लेन करते हैं. ऑक्सीडेशन एट दिस पॉइंट क्या बनेगा? CH3COOH, CH3CH2COOH ऑक्सीडेशन एंड एसिड ही बन एंड कार्बन एसिड ही बन. ऑक्सीडेशन हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. इसी तरह से अगर हम पाथ बी को लेके चलें, इस साइड से क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड. फ्रॉम दिस साइड वी गेट फॉर्मिक एसिड एंड फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड. ऑन वन साइड वी गेट फॉर्मिक एसिड, 1 कार्बन एसिड. ऑन अदर साइड वी गेट ब्यूटेनोइक एसिड. और ऊपर देखें वी गेट एसिटिक एसिड फ्रॉम दिस साइड, पाथ ए एसिटिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड. एसिड 2 बार लिखा गया है यहाँ पे, गलती से इग्नोर इट. प्रोपेनोइक एसिड. तो दिस इज मेजर प्रोडक्ट, दिस इज माइनर प्रोडक्ट. ये हो गया पॉपऑफ्स रूल. अगर आप इसकी केमिस्ट्री को समझना चाहें ऐसा क्यों हुआ, तो वो भी मैं आपको समझा सकता हूँ. उसका रीजन है कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉनिकली रिच पार्ट जो होगा, जो बॉन्ड होगा, वहां पे ऑक्सीडेशन के चांस ज्यादा होंगे. तो प्रोपाइल ग्रुप हैज मोर प्लस साइड इफेक्ट, more electron releasing tendency. So this bond is more electronically rich. Oxygen will preferably attack this bond as compared to this bond. ये इसकी केमिस्ट्री होगी. पॉपऑफ रूल क्या है कि whenever we have unsymmetrical, तब भी हमारे पास क्या होगा बच्चे? unsymmetrical क्या? unsymmetrical ketone, the carbonyl group will prefer to stay with the smaller alkyl during oxidation of ketone. Now another oxidation with sodium hypohalite. Sodium hypohalite क्या है बच्चे? NaOH. And where from it come? NaOH. It come from NaOH plus halogen. It gives NaX plus NaOH. Sodium hypohalite. ऐसे मिलता हमें. When we treat aldehydes with NaOH and halogen, NaOH and halogen, in the first step, it causes chlorination. Chlorination करेगा बच्चे पहले step of all the alpha carbon hydrogen bonds, and we get trihalo derivative. हमें क्या मिल जाएगा? Trihalo derivative. In the next step, it will cause what? चाहे आप NaOX के साथ कर ले बच्चे, अगर NaOX लिखेंगे यहाँ पे X करेगा,
क्या बचे, हेलोजिनेशन माइनस क्या हो जाएगा, NaOH। आप ऐसे लिख लें चाहे, इट इज योर चॉइस, यू कैन राइट इट लाइक दिस, यू कैन राइट इट लाइक दिस। तो इन द फर्स्ट स्टेप देयर विल बी हेलोजिनेशन, इतना याद रखें, इन द फर्स्ट स्टेप क्या होगी, हेलोजिनेशन, दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ all alpha hydrogen with halogen, we get trihalogenated product, and in the next step हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्यों होगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉइंग ग्रुप आ जाएंगे, दे विल एक्सर्ट स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, इस कार्बन के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, so it will attack here, what we get, HCOOH, but salt is always formed by strong acid, so instead of HCOOH we will write HCOONA plus क्या बनेगा बच्चे, क्लोरो, दैट इज CHCl3, साथ में क्या बनेगा बच्चे, CHCl3, विल गेट CHCl। डायग्राम को हम ठीक करते हैं थोड़ा सा, दिस इज लाइक CHCl, का रीजन मैंने बता दिया आपको कि स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट ऑफ द 3 halogen on carbon is making this carbons electronically deficient, so OH negative will attack here। आप कहेंगे यहां तो बढ़ना चाहिए फिर HCOOH, मैं वही कह रहा हूं कि एसिड स्ट्रॉन्ग जो होता है वही सॉल्ट बनाता है, तो H क्या करेगा, H इसको दे देगा ये, और Na यहां आ जाएगा, मतलब HCOONA ऐसे बढ़ना चाहिए, देखें C नेगेटिव Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव की जगह किसने ले ली बच्चे, H ने, सो वी गेट क्लोरोफॉर्म। अगर हम आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं, वी गेट आयोडोफॉर्म। फर्स्ट स्टेप इज सेम, हियर देयर इज क्लोरीनेशन, हियर देयर इज आयोडीनेशन, आयोडीनेशन कैन बी डन ऑन दिस साइड और दिस साइड, किसी एक साइड हो जाएगा। दूसरा स्टेप आपके दिमाग में आएगा कि सेकंड स्टेप में जो आयोडीनेशन हमने कर दी, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या होगा, क्या सेकंड स्टेप में जो दूसरी साइड आपका जो ग्रुप है, बच्चे देखें CH3 iodination on this side, why not on this side, then before iodination on the second side could occur, hydrolysis will occur, because of strong minus I effect of these halogen atoms, this carbonyl group will be attacked by the negative, इसको अटैक कर देगा, तो दोनों साइड आयोडिनेशन नहीं होगा, चाहे दोनों साइड मिथाइल लगे हैं, iodination will occur only on one side, this is very important। what do we get iodine, iodoform precipitates has a yellow color, chloroform is a gas, but iodoform is a solid and it has yellow colored precipitates, along with formation of क्या बनेगा बच्चे, CI3COON, CH3 CI3COON, यहाँ से CI3COOH, एसिड नहीं बढ़ना, मैंने कहा उसका सॉल्ट बढ़ना, सो वी गेट CI3 क्या बचे, COO, minor mistakes were there, I have corrected them। So iodoform test, due to formation of yellow precipitates in case of reaction with NaOH and iodine, this reaction is known as iodoform test and is used to distinguish aldehydes and ketones containing CH3CO group। जिनमें CH3CO ग्रुप होगा उसके लिए हम इसको एज ए टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, यू टेक एस्टल्डिहाइड, you treat it with iodine in presence of NaOH, what you will get, you will get triiodoacetaldehyde, triiodoacetaldehyde, the triiodoacetaldehyde in the next step get hydrolyzed by NaOH, ये अटैक करेगा बच्चे। अब यहाँ पे अटैक क्यों कर रहा बताइए, why, because of strong minus I effect of all these groups, ये माइनस आई इफेक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहे हैं एंड मेकिंग दिस कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सी नेगेटिव क्या ले लेगा, Na पॉजिटिव, बट बाद में री अरेंजमेंट कह लें आप, रीडिस्ट्रीब्यूशन कह लें, अल्टीमेटली इट विल हैव H, साथ में क्या बन जाएगा बच्चे, HCOON, HCOON, दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो चाहे मैं वही बात कर रहा था, CH3CO ग्रुप शुड बी देयर,
CH3CO group is present in aldehydes जैसे acetaldehyde as well as in ketone जैसे acetone. Those compounds which contain this group, whenever they are treated with iodine in presence of alkali, what we get? We get yellow precipitates of iodoform. It means this reaction can be used to detect the presence of this group in the molecule. किसी भी मॉलिक्यूल में आप अगर आपने ये ग्रुप देखना हो, इस ग्रुप को चेक करना हो, आप आइडोफॉर्म टेस्ट करिए उसके ऊपर. If you get the yellow precipitates, it means this group is present. Next was all about oxidation reactions of what? Aldehydes and ketones. Now, in the next video lecture, we will study the reduction reactions of aldehydes and ketones. Thank you. Thank you very much. This is my WhatsApp number. You can WhatsApp me if you have any doubt, any query regarding this video lecture. Thank you. Thank you very much.